Hello dear students, welcome to my YouTube lecture. So, in this video lecture, I am going to explain applications of Laplace transform. So, most beautiful application of this Laplace transform is to solve differential equations. तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, how to solve ordinary linear differential equation. So while solving ordinary differential equation, first of all we have obtained complementary function and then particular integral, and thereafter we found complete solution, right? So instead of doing this longer procedure, here we are going to solve ordinary differential equation with constant coefficients with the help of Laplace transform method. This is very important application of this Laplace transform. Now here is the working procedure to solve ordinary differential equation with constant coefficient. Okay, so in very first step we take Laplace transform on both sides of given linear differential equation. Then we find Laplace transforms with of the terms present in that differential equation, and for that we use standard results of Laplace transform. Then also we use given initial conditions. Okay, अगर आपको कुछ initial condition provide की हुई है, then we use that initial conditions also. Okay, then in next step we transpose the terms with minus signs towards right side. Laplace transforms लेने के बाद जितने भी टर्म्स में निगेटिव साइंस है उन सब टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में. ओके, देन वी डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y बार. अब यहाँ पर y बार क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू, और x की जगह पर हमने यहाँ पर टाइम वेरिएबल t यूज किया है, राइट? दैट्स व्हाई इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म d2y/dt² प्लस dy/dt प्लस 3y इक्वल्स टू sin t एक्सेट्रा. सो अगर आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पर अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते थे, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. बाद में हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. तो समझो मुझे अगर d2y/dt² का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, देन वी यूज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो वंस वी कॉल द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, सो एज यू ऑल नो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt होता है s इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. तो यहाँ पर देखिए मैंने y बार नोटेशन यूज किया है. सो y बार डिनोट व्हाट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन यूज किया है. इससे पहले हमने f ऑफ t के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को f ऑफ s डिनोट किया था लाइक दिस, बट हियर y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम y बार से डिनोट करने जा रहे हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy/dt इज s into y बार माइनस y ऑफ 0. आपको f ऑफ s के फॉर्म में फॉर्मूला मालूम है ना, तो हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dd ऑफ f ऑफ t हमने लिया था s f ऑफ s माइनस स्मॉल f ऑफ 0. बट यहाँ पर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हियर वी टेक s इनटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, और लैप्लास ऑफ y को ही हमने यहाँ पर y बार डिनोट किया है माइनस f ऑफ 0. अब यहाँ पर f ऑफ t मतलब हमारे पास कौन सा फंक्शन y, सो y ऑफ 0. ओके, एंड दैट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt² क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट विद s². अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है देन इट स्टार्ट विद s³. ओके, एंड देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इट विल बी स्टार्ट विद s⁻⁴. ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y/dt² इज s² into y bar minus s into y of 0 minus y dash of 0. अब फिर से y बार डिनोट करता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. अगर उस पर बार नहीं है then it is our original function in terms of t.
Okay, so like this, here we use definition or the property of Laplace transform, derivative property of Laplace transform. Okay, then in next step, we collect all the terms of y bar together, because our ultimate aim is to solve given differential equation, right? And solving differential equation means finding value of dependent variable. तो जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट? सो उस एग्जांपल में हमने y को डिफरेंशिएट किया था. So solving such a differential equation means finding value of y. Okay, so अपना aim क्या है? Our aim is to find value of y. Okay, so Laplace transform लेने के बाद आपको कुछ y bar की terms मिलेगी. So we collect all the terms of y bar together. Okay, so divide by the coefficient of y bar. तो y bar के साथ जो भी term होगी उस टर्म से हम राइट साइड की हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे. ओके, सो दैट वी गेट y बार एज ए नोन फंक्शन ऑफ s. इससे क्या होगा? y बार s के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. अब फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. y बार मीन्स व्हाट? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. तो y बार मिलने के बाद y बार से हमें y कैसे मिलेगा? So if we take Laplace inverse on both sides, so by taking L inverse on both sides, you will get value of y. तो देखिए पहले हम s y bar find करेंगे. Afterwards, so to resolve this function of s into partial fractions, क्योंकि Laplace inverse find करने के लिए हम partial fractions वगैरह वो सब methods यहाँ पर apply करेंगे. So we resolve all these functions of s into partial fractions, and thereafter we take inverse Laplace transform on both sides. Okay, so that we get required value of y. So this gives us y as a function of t, and which is solution of given linear differential equation. Okay, so this is all about working procedure to solve linear differential equation with the help of Laplace transform method. Now I will take few examples of this method. So here I take first example. Solve d square plus 2d plus 5 into y equals to e to the power minus t sin t, with y of 0 equals to 0 and y dash of 0 equals to 1. So these are the initial conditions. Okay, and here capital D denote d by dt. As our independent variable is t, so this d denote d by dt. Okay, and we solve this differential equation with the help of Laplace transform method. Okay, so first of all, I write this equation in terms of these differential coefficients. So d square y can be written as given differential equation is d2y by dt square plus second term आएगी 2 times dy. अब dy मतलब क्या आएगा? d मतलब d by dt of y plus 5y equals to e to the power minus t into sin t. Now in first step we take Laplace transform on both sides. So Laplace transform of this d2y by dt square is, so for second order derivative we start with s square into y bar, okay, minus s into y of 0 minus y dash of 0. This is derivative property of Laplace transform plus 2 into dy by dt. अब 2 तो एज इट इज रहेगा, और dy by dt का Laplace transform क्या आता है? s into y bar minus y of 0, and we multiply each term by 2. So we get 2s
into y bar minus 2 as it is, so 2 into y of 0, okay, plus 5y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 5y बार इक्वल्स टू, नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू साइन t। तो यहाँ पर हमें कम से कम स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधे ही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो इफ सम फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल टर्म देन वी यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। सो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at f of t कैन बी रिटन एज f of s माइनस a, ठीक है। मीन्स हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कौन सी टर्म है, साइन टी। तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, 1/s² प्लस 1, ओके। नाउ इन दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हाँ यहाँ पर अपने एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, निगेटिव। अगर निगेटिव पावर है तो यहाँ पर हम लेते हैं एफ ऑफ एस प्लस ए, ओके। नाउ हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पर s रिप्लेस हो जाएगा s प्लस 1 से। तो इफ वी रिप्लेस दिस s बाय s प्लस 1 देन इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बिकम, सो हियर डायरेक्टली आई राइट इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इट इज 1/s रिप्लेस हो जाएगा s प्लस 1 से, ओके, प्लस 1। So this is all about Laplace transform of given differential equation. Okay. Now here we use given initial condition. So what is given to us? But we have given that y of 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? Y of 0 is 0 and y dash of 0 is 1, right? So जितनी भी y of 0 की टर्म्स है वो सभी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। So हम देखते हैं हमारे पास y of 0 की कौन सी टर्म है। So here is y of 0, so this term becomes 0. Here is also y of 0, so again this term becomes 0. Okay, and that of y dash of 0 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1. So by putting all these values, above equation reduces to, तो देखते हैं हम सिर्फ हमारे पास क्या क्या बचेगा। So s² into y bar, ओके, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। Now y dash of 0 क्या है अपना, 1, so we get here minus 1. Then next term twice s into y bar, then this term also becomes 0, okay, plus 5y bar equals to 1/, अब थोड़ा सा हम इस डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आता है, s² plus twice s plus 1, and one more 1 is there, so we get here plus 2. Now we collect all the terms of y bar together, also we shift terms having negative sign towards right side, तो अब ये -1 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, so that हाँ, and also we collect all the terms of y bar together, so y bar कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा s², यहाँ पर बचेगा twice s, and in last term that is 5, okay, into y bar। अब ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, so we get 1/s² plus twice s plus 2 plus ये वाला 1, okay। now नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y bar के साथ जो भी s का फंक्शन है उस फंक्शन को हम राइट साइड में ले जाएंगे। मीन्स ईच टर्म ऑफ राइट साइड ना, राइट साइड के हर एक टर्म s² plus twice s plus 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ओके। एंड हिंस यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, y bar। सो y bar इक्वल्स टू, इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर टर्म मल्टीप्लाई थी, इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगी, सो 1/s² plus twice s plus 2, और ये वाली टर्म भी यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट इज s² plus twice s plus 5, ओके, प्लस
1, and this term also is divided by s square plus twice s plus 5. Okay, so in this way here we get y bar. Now our aim is to find Laplace inverse of this function, but without applying partial fractions it is not possible. Okay, so we resolve all the terms into partial fractions. Okay, so by applying partial fractions, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने वाली हूँ. सो आफ्टर रिजॉल्विंग ऑल दिस टर्म्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस we get 1 by 3 upon s square plus twice s plus 2, then minus 1 by 3 upon s square plus twice s plus 5, then plus 1 upon s square plus twice s plus 5. ओके, अगर आप लास्ट की दो टर्म्स ऑब्जर्व करते हैं, अगर इन दोनों टर्म से मैंने 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1/3 और यहाँ पर बचेगा +1. -1/3 प्लस 1 आता है पॉजिटिव 2/3. So we add these two terms. Okay, so we get y bar equals to 1/3 times 1 upon, अब हमें इसका लैप्लास इनवर्स भी लेना है. That's why we try to express this denominator in terms of whole square. ठीक है, तो हम देखते हैं इसे होल स्क्वायर में ट्राई करते हैं. So s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस, मैंने अगर इस 2 को ऐसा स्प्लिट कर दिया 1 plus 1. ठीक है, so by combining first 3 terms you will get s plus 1 whole square. ओके, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा +1. ठीक है, सो हियर हमने एक एडजस्टमेंट की हुई है. ओके, देन इन नेक्स्ट टर्म आल्सो we make some adjustment, but their addition is 2/3 into 1 upon, यहाँ पर आएगा फिर से s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, अब 5 स्प्लिट हो जाएगा 1 प्लस 4 से, तो s स्क्वायर प्लस ट्वाइस s प्लस 1 आएगा s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4. ठीक है, now it is possible to find Laplace inverses of these two terms. Okay, now by applying inverse Laplace transform on both sides, we get L inverse of y bar equals to 1/3 into L inverse of 1 by s plus 1 होल स्क्वायर, या तो फिर कंप्लीट टर्म को हम लैप्लास इनवर्स से ऑपरेट करेंगे. सो इट इज 1/3 into 1 upon s plus 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 into 1 upon s plus 1 होल स्क्वायर प्लस 4. Okay, now if you observe this completed function, if you observe this complete function carefully, then it represents function of s plus 1. It is the function of s plus 1, and we know Laplace inverse of function of s plus 1 is e to the power minus t into Laplace inverse of f of s, and this is nothing but first shifting property of inverse Laplace transform. Okay, so by using first shifting property of inverse Laplace transform, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है. सो वी गेट now
लैप्लास इनवर्स ऑफ y बार क्या डिनोट करता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। तो अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y पर फिर से L इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? L इनवर्स L गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? y। ओके, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ y बार इज y। ओके, सो y इक्वल्स टू, अब जबकि ये s+1 का फंक्शन है तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या आएगा? e टू द पावर माइनस t into Laplace inverse of f of s. Now this s+1 is replaced by s। ठीक है, तो देखते हैं हम s+1 को s से रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1/3 into 1 upon s square plus 1 plus 2/3 into 1 upon s square plus 4, and this 4 can be written as 2 square। Okay, so equals to e to the power minus t into 1/3 1 by s square plus 1 का लैप्लास इनवर्स आता है sin t plus 2/3 into sin of 2t upon 2। Now 2 get cancelled and hence y equals to e to the power minus t into 1/3 sin t। यहाँ पर 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा? 1/3। तो आप दोनों टर्म से 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं। सो इट इज e टू द पावर माइनस t/3 into sin t plus sin 2t। Okay, so this is all about complete solution of given ordinary differential equation using Laplace transform method। Now we are writing second example. Solve dy by dt plus 2y plus integration from 0 to t y dt equals to sin t, and here we have given initial condition y of 0 equals to 1, and we solve it by using Laplace transform method। So in very first step we take Laplace transform on both sides। So Laplace transform of dy by dt is s y bar minus y of 0, then 2 times Laplace of y is y bar प्लस यहाँ पर हम Laplace ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो यूजिंग इंटीग्रल प्रॉपर्टी वी डिवाइड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y बाय s। किससे डिवाइड होगा? s से डिवाइड होगा, एंड हेंस Laplace ऑफ दिस इंटीग्रल इज 1 बाय s इनटू Laplace ऑफ y क्या रहेगा? y बार इक्वल्स टू Laplace ऑफ sin t इज 1 upon s square plus 1। Now we use initial condition and it is y of 0 equals to 1। so ये y of 0 रिप्लेस हो जाएगा अब 1 से। okay, so we get this expression। now from this expression we collect all the terms of y bar together। so by taking this y bar common we get s plus 2 plus 1 by s into y bar, and we shift this negative term towards right side, so this minus 1 transpose into plus 1। okay, now we simplify this bracket, so we get s square plus twice s plus 1 by s y bar into this right side as it is। now if you observe this numerator is nothing but whole square of s plus 1। okay, अब क्या करेंगे हम? y bar के साथ जो भी फंक्शन है उससे हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, सो दैट वी गेट y बार इक्वल्स टू, अब ये टर्म भी डिवाइड हो जाएगी इस टर्म से, मतलब हम इसके रेसिप्रोकल से राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट s अपॉन दिस s स्क्वायर प्लस 1 इनटू दिस s प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, सो वी गेट s बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज y बार, बट अगेन उसका लैप्लास इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं है, सो वी रिजॉल्व ऑल द टर्म्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। सो वी गेट y बार इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस हाफ टाइम्स 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम these two terms we take 1 upon s plus 1 whole square common, so that we get minus half minus 1, minus half minus 1 कितना होता है? -3/2, so we get -3/2 times 1 by s plus 1 whole
स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम इस टर्म का लैप्लास इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं. सो टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट y इक्वल्स टू हाफ टाइम्स 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स होता है sin t. देन 1 बाय s प्लस 1 का लैप्लास इनवर्स होता है e टू द पावर माइनस t. दिस माइनस 3 by 2 remain as it is, and since it is function of s plus 1, so first of all we apply first shifting property. so first shifting से आपके पास आ जाएगा e to the power minus t. so we take Laplace inverse of only 1 by s square, and 1 by s square का Laplace inverse क्या होता है t. okay, so in this way we have obtained solution of this linear differential equation with the help of Laplace transform method. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो विद दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर, एंड ये यूनिट पे हमारा यहाँ पर एंड हुआ. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.